Okay. Hello, everyone. A very good evening to all of you. Today we have Dr. Parvez Alam, one and only from MCH Urology, AIMS Raipur. He's MBBS, MS EMU, that is Aligarh Muslim University, ex-senior resident surgery, AIMS New Delhi. A very warm welcome to you, sir, and we are really happy to have you on this platform of Homepage 360. And today we are absolutely sure that we are gonna learn lot of things on urology because we have seen you on the social media, on various platforms, on national and international platforms, that you have taught us everyone so brilliantly on urology. So let's have a quick biography of Dr. Parvez Alam. Dr. Parvez Alam sir is a highly accomplished urologist based in Delhi with over 15 years of experience in healthcare field. He holds an MBBS and MS in general surgery, followed by MCH in urology from AIMS Raipur, solidifying his expertise as super specialist in urology. Dr. Alam has made significant contribution to the medical community, presenting his cases at esteemed global platforms, including the World International Conference of Urology. His dedication to research is evident in his 7 publications in prestigious medical journals, notably his pioneering work on assessing the difficulties of gallbladder stone surgery was recognized by Aligarh Muslim University. Beyond his clinical and academic achievements, Dr. Alam Sir has been honored as chief guest as Jamia and several other universities and medical colleges with expertise in advanced laparoscopic surgeries with a wide range of urological procedures. He remains committed to improving patient care and driving advancements in the field of urology. Thank you so much, sir, for coming on this platform today. And our audience, who is the homeopathic lovers and homeopathic and general physicians. Plus, we have a lot of students and doctors who want to learn about the urination tips, clinical tips, and how to diagnose. And we have a very interesting topic today. So, thank you so much, sir, for giving us your valuable time. Thank you very much. Can we start? Yes, sir, sure. ओके, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आर यू देयर एवरीवन? एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरीवन? क्या मैं सबको Yes, सुनाई sir, दे you रहा are. हूँ? Yes, sir. सो हाउ डू आई, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सबको सुनाई दे रहा हूँ या कंफर्म है? So, everyone can write their queries or any doubt and the answer of our question in the question and answer box. Like ओके, we have this option. ओके, Can anybody from the audience? Yes, sir. They are saying you are audible. ठीक है। आज हम जिस चीज़ पे डिस्कस करेंगे, वो चीज़ जो प्रॉपर यूरिनेशन कैसे होना चाहिए, एक बंदे को पेशाब कैसे करना है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज आप सुनेंगे वो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए वो काम करेगा। मतलब आज जो भी आप यहाँ से टिप्स लेके जाएंगे, वो ना सिर्फ एक नॉर्मल एक यंग मैन के लिए है, ना सिर्फ एक फीमेल के लिए, ना सिर्फ ये ओल्ड एज के लिए, ये एक हर एक लोगों के लिए जो किसी भी एज ग्रुप में होगा। तो सबसे पहले जो मैं अपना टॉपिक बताऊंगा उसको कई सारे पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। आप अगर आपके पास पेन है या कोई भी आप अपने पास अगर कॉपी रखे हुए तो आप प्लीज राइट इट डाउन, कहीं आप इसको नोट करिए, क्योंकि ये एक ऐसा टिप्स है जो मैं बताऊंगा जो आज तक कई सारे लोग ये सोचते हैं कि पेशाब करने का कोई तरीका, इसमें क्या बताने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पेशाब करने का कोई तरीका होता भी है क्या, इसमें कोई टिप्स जानने की कोई बात ही नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है जो सबको जानना चाहिए, और मुझे लगता है कि हर एक बंदे को पता होना चाहिए कि एक यूरिन कैसे करना चाहिए। और अगर आपको ये बात पता होगा तो आने वाले वक्त में जब आप 60 इयर्स ओल्ड या 70 इयर्स ओल्ड में अगर आप पहुंचेंगे, तो एक प्रोस्टेट नाम की जो बीमारी कभी कभी किसी को हो जाता है,
तो आज ही से अगर समझ सकते हैं तो आगे आने वाले वक्त में बिल्कुल आप उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। आने वाले वक्त को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको वो बीमारी ना हो जो अगर यूरिन से रिलेटेड हो जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनना है। मैं लास्ट में क्विक रिकैप करूँगा और मैं सबको बताऊँगा कि आपने क्या-क्या समझा है और किस तरीके से समझा है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इस पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करूँगा। सबसे पहला पार्ट जो होगा कि प्रॉपर यूरिनेशन टिप्स एक ओल्ड एज पेशेंट में या एक ओल्ड एज लोगों के अंदर यंग मेल में जो नॉर्मल है, उनमें क्या होगा? प्रॉपर यूरिनेशन बीपीएच के पेशेंट को कैसे आपको कंट्रोल करना है यूरिन का। तीसरा होगा कि आपको कैसे जो है आप प्रॉपर यूरिनेशन करेंगे अंडर एक्टिव ब्लैडर, मतलब आपको ब्लैडर काम नहीं कर रहा है। और चौथा है कि आप अगर आपका ओवर एक्टिव ब्लैडर हो गया कि अगर आपका पेशाब का थैला बहुत तेजी से काम कर रहा है, तो ऐसे में आप कैसे कंट्रोल करेंगे। एक सिर्फ आप यूरिनेशन के तरीके से वो जानकर आप बहुत सारे चीज को आप इसमें तब्दीली ला सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि प्रॉपर यूरिनेशन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले मैं 2-3 टेक्निकल वर्ड बोलूँगा, उसको मैं पहले ही मैं बता देता हूँ कि उसका मतलब क्या है। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा कि ब्लैडर को ट्रेनिंग करना है, जैसे हम मसल्स को ट्रेन करते हैं जिम में जाके, ठीक वैसे ही ब्लैडर को ट्रेंड करना है। मतलब कि आप ब्लैडर को ऐसे बनाना है कि आपका ब्लैडर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ना करके अपने आप कॉन्ट्रैक्ट ना करे और यूरिन बाहर ना करे। ब्लैडर को ऐसे बनाना है कि अपने ऊपर कंट्रोल करना है कि जब मैं चाहूँ तब मैं यूरिन करूँ, जब मैं चाहूँ तो मैं यूरिन ना करूँ। तो वो कैसे बनाएँगे, ब्लैडर को कैसे ट्रेंड करेंगे। दूसरा चीज़ मैं कहीं-कहीं बोलूँगा डबल वॉइड। डबल वॉइडिंग का मतलब ये हुआ कि आप एक बार पेशाब करिए, आप यूरिन पास करिए, उसके बाद 30 सेकंड या 50 सेकंड के लिए आप कहीं पे रुकें और दोबारा से यूरिन पास करें। इस चीज़ को हम बोलते हैं डबल वॉइड करना। ओके। तीसरा मैं आपको बीच में बोलूँगा कि आपको एक ब्लैडर के साथ-साथ ब्लैडर डायरी। तो ब्लैडर डायरी का मतलब ये हुआ कि आप एक डायरी बनाएँगे, आप यूरिन से रिलेटेड कि आप कैसे एक पेशाब करते हैं, आप कितना अमाउंट में पेशाब करते हैं, कितना कैलकुलेट करेंगे, कितना पानी पीते हैं, किस टाइम पे पेशाब करते हैं, वो सब की हम एक डायरी बनाते हैं ताकि फ्यूचर में आपको पता चल सके कि आपको सच में बीमारी है भी या नहीं। ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि 1-2-3 जो टेक्निकल वर्ड है, जिससे मैं एक और चीज़ वो यूज़ करूँगा, ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर और बीपीएच में बहुत सारे डिफरेंस है। ओवर एक्टिव ब्लैडर का मतलब ये होता है कि आपको एक अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी हो रही है, मतलब आपको बहुत तेजी से पेशाब लग रहा है, इतना तेज पेशाब लग रहा है कि लगता है कि आपको जो है पैंट में ही पेशाब हो जाएगा और आप कंट्रोल नहीं कर पाते। और जैसे ही जाते हैं आप वॉशरूम में, कभी कभी बूंद 1-2 बूंद टपक जाता है। इसको हम बोलते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर, लेकिन यही चीज बीपीएच में भी होता है। तो आप कैसे डिफरेंस करेंगे कि हमको ओवर एक्टिव ब्लैडर है कि हमें बीपीएच है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ओवर एक्टिव ब्लैडर में अंडरलाइंग पैथोलॉजी नहीं होगा, मतलब कि आपको कोई यूटीआई नहीं होगा, आपको कोई भी इंफेक्शन या स्टोन या कोई हिमेचुरिया या कैंसर या बीपीएच, ऐसे पैथोलॉजी ओवर एक्टिव ब्लैडर में नहीं होते। ये सिर्फ ब्लैडर के अंदर के जो मसल्स है उसके डिट्रोसर कंट्रैक्शन है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होने की वजह से हो जाता है। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर का मतलब ये हुआ कि आपको बहुत तेजी से पेशाब लग रहा है, बार बार पेशाब लग रहा है, लेकिन आपको कोई पैथोलॉजी नहीं है। ये यंग स्टेज में भी हो सकता है, ओल्ड में भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, फीमेल मेल किसी को भी हो सकता है। ठीक है, एक टर्म समझ में आ गया ओवर एक्टिव ब्लैडर। दूसरा जो एक टर्म है जो बीपीएच। बीपीएच का मतलब ये हुआ बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, मतलब कि आपका प्रोस्टेट का जो साइज है बढ़ गया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि जो बीपीएच जो प्रोस्टेट होता है वो सब में होता है, सारे मेल के अंदर है। और जितने भी मेल हैं सबके अंदर बीपीएच जो है प्रोस्टेट बढ़ेगा। जैसे ये नेल आप देख रहे हैं, जैसे नेल अगर आपने नहीं काटेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, ठीक वैसे ही आपका प्रोस्टेट के साथ है। अगर प्रोस्टेट को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब ऊपर वाले ने आपको प्रोस्टेट ऐसा बनाया है कि ये लाइफ टाइम तक बढ़ता जाएगा, आप कोई भी दवाई ले लें, कुछ भी कर लें, ये बढ़ेगा ही। लेकिन सिम्टम्स किस में आएगा वो अलग अलग लोगों में आता है। तो हर एक मेल के अंदर बी प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये एंड तक बढ़ता रहता है, इसके अंदर रिसेप्टर खत्म होते ही नहीं है। रिसेप्टर होने की वजह से ये बढ़ता जाएगा। और इस बीपीएच वाले पेशेंट में ज़्यादातर देखा गया है, इनफैक्ट ये मैक्सिमम लोगों में ये ओल्ड एज में ही होगा।
इसमें भी आपको बार-बार खूब तेज़ पेशाब लगेगा, इतना तेज़ लगेगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएँगे और जब जाएँगे आप टॉयलेट में तब तक आपका 1-2 बूँद निकल जाएगा। इसमें साथ-साथ बहुत सारे और भी कंप्लेन होंगे, जैसे आपका पेशाब का धार काफ़ी पतला हो जाएगा बीपीएच में। हो सकता है आपको बहुत ज़ोर लगा के पेशाब करना पड़ रहा है बीपीएच में, लेकिन ये यंग एज में नहीं होगा। इसमें कोई ना कोई पैथोलॉजी होगा, जैसे कि प्रोस्टेट बढ़ गया। तो आपका बीपीएच एक ओवर एक्टिव ब्लैडर, ये 2 डिफरेंट चीज़ हैं, आपको समझना होगा। फिर उसके बाद आते हैं अंडर एक्टिव ब्लैडर में। अंडर एक्टिव ब्लैडर क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ब्लैडर है वो अंडर एक्टिव हो गया, मतलब वो काम नहीं कर रहा है। मतलब 2 किडनी, यहाँ पे हर इंसान का 2 किडनी होता है और एक पाइपलाइन होता है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, और दोनों यूरेटर आके खुल जाते हैं ब्लैडर में। ब्लैडर के अंदर जो है कभी-कभी अंडर एक्टिव हो गया, इसका मतलब कि आपका ब्लैडर के जो है मसल्स काम नहीं कर रहे हैं। अगर ब्लैडर के मसल्स काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि ये क्यों नहीं काम कर रहा? हो सकता है कई सारे नर्व इसके अंदर जो पहले से मौजूद थे, उनके अंदर कोई डिफेक्ट हो गया जिसकी वजह से आपका कोई भी ब्लैडर के अंदर मसल्स काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जो किडनी तो यूरिन बना रहा है, पानी बना रहा है, वो तो सही है, वेल फंक्शनिंग है, वो अपना पानी बनाता जाएगा। जब पानी बनाता जाएगा तो ब्लैडर में आके इकट्ठा होगा थ्रू द यूरेटर। तो अगर मान लीजिए आपका ब्लैडर जो है अंडर एक्टिव हो गया, तो ब्लैडर ये ऐसे कोलैप्स करता है। ये ब्लैडर मान लीजिए जैसे कोलैप्स करेगा तो यूरिन बाहर निकलेगा। लेकिन आपका ब्लैडर अंडर एक्टिव हो गया, वो कोलैप्स ही नहीं कर रहा है, तो बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसकी वजह से पूरा यूरिन आपका अंदर ही इकट्ठा रह जाएगा और धीरे-धीरे जो आगे बढ़ने के बजाय ये ऊपर बढ़ने लगेगा। आपको पूरा किडनी में सूजन दे देगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे जब पूरा भर जाएगा तो बूँद-बूँद टपकेगा। आपको लगेगा कि हमें बार-बार पेशाब लग रहा है। इनफैक्ट उसमें क्या हुआ है कि वो पूरा पेशाब का थैला जो है पूरा भर चुका है। बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, यूरिन भरा हुआ है। इतना ज़्यादा भर गया है कि वो ऊपर जाने लगा है। उसके बाद भी इतना ज़्यादा भर गया है कि थोड़ा-थोड़ा निकल रहा है। अब ये ब्लैडर तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन कभी-कभी हम ऊपर से प्रेशर देते हैं, बहुत ज़ोर लगाते हैं, एब्डोमिनल प्रेशर देते हैं, तो थोड़ा बहुत यूरिन बाहर निकल जाता है। तो अंडर एक्टिव ब्लैडर में आपका बूँद-बूँद पेशाब होगा, लेकिन आप बहुत ज़ोर लगाएँगे तभी पेशाब बाहर निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। वही ओवर एक्टिव ब्लैडर में आपको ज़ोर नहीं लगाना था। वही बीपीएच वाले पेशेंट में आपको ओल्ड एज में देखने को मिलता था और उसमें भी कभी-कभी जोर लगाना, लेकिन वो आपका जो है ऐसा। जे एक और बात बता दूँ, अंडर एक्टिव ब्लैडर के अंदर एक बार पेशाब आएगा फिर रुक जाएगा, फिर पेशाब आएगा फिर रुक जाएगा, फिर पेशाब होगा फिर रुक जाएगा, ये अंडर एक्टिव ब्लैडर में होगा। ठीक वैसे ही बीपीएच वाले पेशेंट में क्या होता है कि आपका पेशाब आएगा, रुकेगा नहीं, बिल्कुल ज़ीरो नहीं होगा। वो पेशाब आएगा लेकिन थोड़ा बहुत होता रहेगा, भले ही फ्लो उसका कम हो जाए। तो 3 डिफरेंट चीज़ है, तीनों के लिए अलग-अलग यूरिनेशन का टिप्स है, तीनों अलग-अलग मैनेज होते हैं। आप सिर्फ़ अपने पर्सनल बिहेवियर के अंदर चेंजेज़ लाकर उसमें बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करके, डाइट में कंट्रोल करके, इसमें मैक्सिमम चीज़ को आप सही कर सकते हैं। ये बहुत कम लोग को आइडिया है कि किसमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। लोगों को लगता है कि हम जो हमारे जो बीमारी है वो उसका एग्ज़ैक्टली क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि कांसेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बीपीएच के पेशेंट में, ओल्ड एज वाले पेशेंट में। तो बीपीएच को बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि क्या-क्या सिम्पटम्स आ सकते हैं। तो एक बात याद रखे रहिए कि जो प्रोस्टेट होता है, उसकी साइज़ से कोई मैटर नहीं करता है कि आपको सिम्पटम्स कितना है। अगर किसी को प्रोस्टेट 10 सीसी है या किसी को अगर प्रोस्टेट 50 सीसी है, 50 सीसी, दोनों में से हो सकता है कि 50 सीसी का प्रोस्टेट जो है, उससे कोई कंप्लेन ही ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और वही 10 सीसी का प्रोस्टेट आपको कंप्लेन कर सकता है। इसीलिए इससे कोई मैटर नहीं करता है कि आपका प्रोस्टेट की साइज़ कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। तो मैटर क्या करता है कि प्रोस्टेट जो होता है 3D होता है, 3 डायमेंशनल में होता है। जैसे ये मान लीजिए कि ये बीच का जो रास्ता है, जैसे ये 2 हाथ के बीच में जो ये आप देख रहे हैं गैप, उसमें यूरेथ्रा है और इधर से आपको यूरिन बहना स्टार्ट हुआ। अगर मान लीजिए प्रोस्टेट जो है आपका जो साइज़ बढ़ा है, ऐसे बढ़ गया, जो मेरा अंगूठा दिख रहा है, आगे की तरफ बढ़ने लगेगा तो बीच रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, ये वाला दिक्कत करेगा। अगर प्रोस्टेट की साइज़ पीछे की तरफ अगर साइड बाय साइड अगर ग्रोथ करेगा, इधर की तरफ ग्रोथ करेगा, इधर की तरफ, तो हो सकता है कि उसमें कोई कंप्लेन ही ना आए। तो जिस प्रोस्टेट में कोई कंप्लेन नहीं आ रहा है, तो उसे कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो पहला चीज़ ये क्लियर हो गया कि आपका जो प्रोस्टेट है, उससे साइज़ से कोई मैटर नहीं करता है। प्रोस्टेट वाले मरीज़ में क्या-क्या कंप्लेन आते हैं, वो समझ लीजिए। हाँ, तो प्रोस्टेट के मरीज़ में क्या-क्या कंप्लेन आएगा?
तो हम लोग इसको कई सारे टाइप्स में डिवाइड करते हैं कि कुछ कंप्लेन ऐसा होगा कि आपको रात में बार-बार पेशाब लगेगा। कभी-कभी प्रोस्टेट के मरीज में ये भी कंप्लेन होगा कि आप जो पेशाब करने जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि पेशाब करने के बाद भी कुछ रह गया है। फिर कभी-कभी आपको कभी पेशाब करने गए तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आपका जो है पेशाब करने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है और पेशाब का धार कम हो गया। और तीसरा एक और कंप्लेन हो सकता है कि बार-बार पेशाब होगा दिन में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर प्रोस्टेट का पेशेंट है तो उसको क्या करना है? एकदम याद कर लीजिए, कभी भी प्रोस्टेट के मरीज़ को टॉयलेट के सामने नहीं बैठना है, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि आप जो वॉशरूम के सामने बैठते हैं तो मेंटल क्यूज स्टार्ट हो जाता है। तो जो यूरिनेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत सारा चीज़ ब्रेन से कनेक्टेड है। हमारा ब्रेन का जो फोरहेड वाला पार्ट है उससे काफ़ी कनेक्शन है। अगर आप देखेंगे कि फोरहेड पे अगर कोई भी हमारा एक्सटर्नल क्यूज दिखता है सामने, अगर आप बैठ जाएंगे तो आपको इवन जो जो आप पेशाब लगा है, जो कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है? तो आपको सबसे पहला टिप्स मैंने बताया कि आपको कभी भी बाथरूम के सामने, वॉशरूम के सामने नहीं बैठना है, पहला चीज़ है, यूरिनेशन के लिए। ये उन्हीं लोग के लिए जिनको यूरिन की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि सब लोग करेंगे। जो सब लोग के लिए करने के लिए एक अलग सा प्रोसेस मैं बताऊँगा। पहले मैं ये 4 चीज़ के अंदर बताना चाह रहा हूँ कि अगर बीपीएच का पेशेंट ओल्ड एज में उसको बार-बार पेशाब हो रहा है, ये उनके लिए है कि आप बाथरूम के सामने ना बैठें। पहला हो गया। दूसरा चीज़ ये हो गया कि अगर आपको बार-बार पेशाब लग रहा है, तो आपको पेशाब कंट्रोल करना है। जैसे आप देखेंगे कि हम जो है बेबी जो बच्चा होता है, बार-बार क्राई करता है, रोता है, तो हम उसको जा-जा के हर वक़्त उसको समझाते नहीं हैं। इसीलिए आपको अगर बहुत बार-बार भी पेशाब लग रहा है, तो बार-बार आपको उठ के जाके पेशाब नहीं करना है। कई बार आपको अपने ब्लैडर को इस तरीके से ट्रेंड करना है, आपको ज़बरदस्ती पेशाब को रोकना है। वो रोके कैसे? बहुत सारी दिक्कत ये भी बात कि पेशाब तो आ जा रहा है, ऐसा हो सकता है कि आपको टॉयलेट आपको पेशाब आपके पैंट में हो जाएगा अगर रोक देंगे। तो स्टार्टिंग बहुत तेज़ी से ना करें, स्टार्टिंग 5 मिनट से करें कि सिर्फ़ 5 मिनट के लिए रोक लें या 10 मिनट के लिए रोकें। रोकने के लिए आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। आपको पेशाब अगर लगे, तो आप एक तो क्रॉस लेग में बैठ सकते हैं। आप अगर क्रॉस लेग बैठते हैं तो उसमें यूज़ हो सकता है। आजकल मोबाइल चला सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, किसी दूसरे आदमी से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। कहा जाता है कि आपको कोई चीज़ अगर भूले-बिसरे बात को अगर याद करना, उसी मोमेंट मोमेंट पे याद करिए। किसी दूसरे आदमी से बात करिए, अपने घर में किसी फैमिली मेंबर से इन्वॉल्व होइए। स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन एक बार ट्रेनिंग करने लगेंगे तो उसके बाद आदत बन जाएगी। तो पहला टिप्स था कि आपको जो है बाथरूम के सामने नहीं बैठना है। दूसरा टिप्स मैंने बताया कि आपको अगर पेशाब लगे तो आपको जाना नहीं है, उसको कंट्रोल करना है। ठीक है? कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है? तीसरा ये चीज़ है कि आप देखिए, हर कोई भी जब भी बीपीएच का पेशेंट है, उनको सबसे मैक्सिमम जो कंप्लेन होता है कि बार-बार पेशाब होता है। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ कि वो जो है पानी की मात्रा जो आप पीते हैं, वो 2 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप एक डायरी बनाइए, डायरी का मतलब होता है कि एक पेन कॉपी लीजिए और उसमें चेक करिए कि आप कितना देर तक पेशाब करते हैं, कितना देर तक पेशाब हो रहा है, पहली बात। जो पेशाब आप करते हैं, वो कितना अमाउंट हो रहा है। शुरुआत के 3 दिन हो सकता है आपको टाइम लगेगा देखने में, तो एक बिसलेरी का बोतल होता है या 1 लीटर का कोई भी बोतल होता है, उसके अंदर पेशाब करिए। एक बार आप ये अपना डायरी बना लेंगे तो लाइफ टाइम के लिए हेल्पफुल होगा। ज़रूरी है कि शुरुआत में आपको दिक्कत है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे सही हो जाएगा। तो एक तो आपको प्रॉपर जो है एक पूरा आप एक बोतल तैयार रखिए अपना, उसके अंदर पेशाब करिए, उससे कंट्रोल उसको देखिए कितना हमने पेशाब किया, उसे नोट करिए। अब पेशाब करने से पहले आपने क्या-क्या लिया था? मतलब पानी पिया था, कॉफ़ी पिया था या कोई स्पाइसी मटेरियल लिए थे या क्या ऐसा लिए थे कि तुरंत आपको पेशाब है? उस सब को चीज़ को नोट डाउन करें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम ये पता चल सके कि आपको पेशाब जो पिछली बार हुआ था, वो क्यों ज़्यादा हुआ था। हो सकता है कि आप ज़्यादा पानी पी रहे हैं इसीलिए बार-बार पेशाब हो रहा है, तो वो पानी कम कर दें। अगर हो सकता है आपने नोट डाउन किया, उससे पता चला कि आज आपने चिकन खा लिया, आज आपने पिज़्ज़ा ले लिया, आज आपने कुछ और ले लिया, तो हो सकता है उसमें भी आपका जो है बार-बार पेशाब हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको क्या करना है, उसे नोट डाउन करना, नेक्स्ट टाइम के लिए वो चीज़ नहीं लेना है। हो सकता है आपने कॉफ़ी पी लिया, चाय पी लिया या कोई बहुत ज़्यादा कोई आजकल गाँव देहात में आप देखेंगे कि बहुत सारे जूस चलते हैं, गन्ने के जूस होते हैं, ये सब भी आपको करा सकता है बार-बार पेशाब करना। तो ऐसे कंडीशन में
आपको ये नोट डाउन करना है कि आपने क्या लिया जिसकी वजह से पेशाब ज़्यादा हुआ, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसको अवॉइड कर सकें। ठीक है? तो एक तो ये हो गया डाइट पे कंट्रोल करना है। डाइट में आपने क्या कंट्रोल किया कि आपने पानी की मात्रा कम कर दिया। वो कैसे पता चलेगा कि आपको पानी की मात्रा ही रिस्पॉन्सिबल है? तो आप एक डायरी बनाएँगे। डायरी में आप अभी कहीं नोट डाउन कर लीजिए, आपने डायरी में क्या-क्या लिखना है कि आपने कितने बजे पेशाब किया। सुबह से स्टार्ट करिए 8 बजे से, कि 8 बजे उठे, पेशाब किया। क्या पेशाब करने से पहले पानी पिया था? क्या पेशाब करने से पहले कोई स्पाइसी मटेरियल लिया था? और पेशाब करते वक़्त आपको अलग से क्या डिफ़ाइन हुआ था? क्या आपको पैंट में ही पेशाब हो गया? बहुत तेज़ी से पेशाब हो गया? और कितना अमाउंट पेशाब हुआ? क्या जितना आपने पानी पिया था उतना ही अमाउंट का पेशाब हो गया? क्योंकि ये इससे आपको पता चलेगा कि आपका कैपेसिटी जो है उतने ही अमाउंट का पेशाब हो जाए। मान लीजिए आप पेशाब अगर 250 एमएल कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका पेशाब का थैला सही है। कई बार क्या होता है, किसी इंसान का पेशाब का थैला ही बहुत छोटा होता है। जब पेशाब का थैला ही बहुत छोटा होगा, तो आपका तुरंत यूरिन से इकट्ठा होगा पेशाब के थैले में और तुरंत पेशाब हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि हमें बीपीएच की वजह से पेशाब हो रहा है, लेकिन आपने जब डायरी बनाए तो पता चला अरे ये तो कुछ और चीज़ है, ये तो हमारा थैला ही छोटा, हमको तो 50 एमएल ही पेशाब होता है। इसका मतलब आपका जो है, जो थैला ही छोटा होने की वजह से कभी-कभी वो कैसे पता चलेगा कि आपका पेशाब का थैला छोटा या बड़ा है? तो आप जब पेशाब करेंगे तो जब कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने में आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना पेशाब है। 1 मिनट, हॉस्पिटल से ऑपरेशन के लिए कॉल आया है। ठीक है? फिर मैं आपको ये तो हो गया कि आपको बाथरूम के सामने नहीं बैठना है। दूसरा चीज़ हो गया, आपको जब भी पेशाब लगे तो नहीं जाना है। तो कब जाना है ये इम्पोर्टेंट है। आप में से कई लोग सवाल कर सकते हैं कि आप अगर पेशाब कंट्रोल तो कितना देर तक हम नहीं जाएँ? तो ये आपको ये याद रखिए, जितना आप देर तक डिफ़र कर सकते हैं। शुरुआत में मुश्किल होता है कि डिफ़र करना, तो हम लोग ये बताते हैं कि आप आफ्टर एवरी 2 टू 3 आवर्स में ही पेशाब करने जाएँ नॉर्मल इंसान। और जब भी पेशाब करने जाएँ उसको नोट डाउन कर लिए, आपके कितने घंटे पे आपको पेशाब लगता है। आप चेक करिए कि आपको हर 2-2 घंटा, 3-3 घंटे पे पेशाब लगता है। मतलब कि यहाँ पे एक और कांसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं टाइम वाइडिंग। टाइम वाइडिंग का मतलब ये होता है कि आप एक कंसेप्ट बना लिए कि आपको हर 2-2 घंटे पे या अपने हिसाब से हर 1-1 घंटे पे या आधे घंटे पे खुद के हिसाब से एक टाइम फिक्स करिए। उसी टाइम को फिक्स करके उतने ही टाइम पे आपको पेशाब करने जाना है। कोई और टाइम पे नहीं करना है। भले आपको पेशाब लगे या ना लगे, आपको पेशाब करने जाना है उसी टाइम पे जब आपको पेशाब लग रहा है। तो ये एक कांसेप्ट है जो बीपीएच के पेशेंट में बताया जाता है। अब मैं आपको दूसरा चीज़ बता रहा हूँ। मैंने आपको 4 टिप्स बताए। एक तो मैंने बताया कि अवॉइड द बाथरूम, ठीक है? दूसरा बताया कि डोंट रश, ठीक है? तुरंत ना भागे पेशाब करने के लिए, कंट्रोल करें जिसको ब्लैडर ट्रेनिंग बोलते हैं। तीसरा हमने बताया कि डाइट पे कंट्रोल करें, कि क्या डाइट की वजह से आपको बढ़ता है। बहुत सीरियस रहेंगे, अगर आपको वाक़ई कोई दिक्कत है, तो आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। बिहेवियर मॉडिफ़िकेशन इसको बोलते हैं। चौथा मैंने आपको बताया टाइम्ड वाइडिंग। टाइम वाइडिंग में मैंने आपको ये बताया कि आपको अपने हिसाब से जो कंफर्टेबल लगे, उस हिसाब से खुद को कंट्रोल करने के लिए एक टाइम फिक्स करना है, उसी टाइम पे पेशाब करना है, कोई और टाइम पे नहीं, भले आपको पेशाब लगे या ना लगे। ये 4 कांसेप्ट था। पाँचवाँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बीपीएच के पेशेंट के लिए, मैं आपको बता दूँ कि इसमें एक केगल एक्सरसाइज़ होती है, जिसको सबको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। आपको तो पता होगा कि कीगल एक्सरसाइज बहुत सारे लोग बताते हैं, कीगल एक्सरसाइज ऐसे करो, वैसे करो। लेकिन आज के टाइम पे कई लोग प्रॉपर तरीके से कीगल एक्सरसाइज नहीं करते। ये बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है और कहीं नोट डाउन कर लेना है कि कीगल एक्सरसाइज कैसे करते हैं और कीगल एक्सरसाइज में फोकस क्या होता है। क्योंकि हम जहाँ पे फोकस करना चाहते हैं वहाँ पे कीगल एक्सरसाइज हो नहीं पाता है और इधर-उधर की चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो जाता है और बहुत सारे लोग गलत तरीके से कीगल एक्सरसाइज करते हैं। और एग्जैक्टली करना कैसे है ये पता ही नहीं है किसी को। 1 मिनट। हुँ, तो कीगल एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट। आप सब लोग सुन रहे हैं? हमें प्लीज़ मेंशन करिए आप क्वेश्चन आंसर में। कई बार ऐसा होता है, वेबिनार ऐसा सेशन होता है कि वन वे कम्युनिकेशन होता है और बहुत बार जो है आप हम लोग इधर-उधर चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप लिख लेना, आप मुझसे बाद में पूछ लेना, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा।
Okay. Yes, sir. You are clearly audible, and sir, few participants are saying that Hmm. they want to webinar to be in English. So, if is it possible that in few points Yeah, you yeah, I can can explain in mention. I English thought also? the audience is mostly on the Indian basis. We can make it in English also. So, Yes, sir. again, I repeat my tips for the urination. The most important thing is to avoid the bathroom. The most important thing is to avoid the bathroom. First thing for all the BPH kind of a patient. Okay. The second most important thing is to avoid the bladder. Bladder training is mentioned in the Hindi. I mention again how to do the bladder training. In the bladder training, you don't have to rush yourself for the urination. Every time you, if you feel any kind of a micturition, whenever you feel the urination, just hold it. Hold as much as possible. Okay. Don't rush for the urination. How to avoid all these things? Just dismantle your brain and just remember each different things apart from the going for the bathroom. Second important thing, and the third most important thing for the urination, I just mentioned in the previously, the time voiding. Time voiding is what? Time voiding, it means that you have to control your the bladder and train your bladder according to the time. You just fix the time when you have to urinate. It means that you have to fix a time whatever you feel the comfortable, whatever you feel that I am feeling, I can void after every 1 hour, I can void after every 2 hour, even I can void, I cannot control void for more than 30 minutes. So accordingly, as per your comfort level, you have to choose, you have to go to the bathroom and train your bladder as a time void. Time void, it means that you have to urinate after every fixed timing, whether it is a 1 hour, 2 hour, or 30 minutes. Just fix the time. You next time in between the two urination, you have to fix that time. I have to pee for after every 1 hour, whether you feel urination or not. It doesn't mean, if even though if you don't have any feeling for the urination, you have to go as per your schedule. Once you train your bladder, once you make your bladder according to yourself, you will be habitual and you will feel that your urination problem has been mostly the subsided and mostly it been controlled. The three thing and the four important thing that I mentioned earlier, the diet control and make a bladder diary. Okay, in the bladder diary, what we do, in the bladder diary you have to write it down when you are going to pee, the timing of the peeing. You have to write it down how much you are taking the fluid. You have to write it down how much you are peeing, how much you are urinating. Just write it down. What triggers your urination, that is most important thing. Whether you are having caffeine, whether you are having some spicy material, whether you are having some kind of a extra beverage, whether you have taking some alcohol, all kind of a things you have to mention and make it for 3 days, minimum 3 days. And then go through retrospectively, you find it down, okay, you are taking extra amount of a fluid, that is why you are going for every kind of a every time you are urinating. So accordingly, as per your bladder diary, you yourself diagnose the condition, you yourself control the urination, you yourself manage the urine problem after making the bladder diary. Bladder diary is so much important for everyone that you can control so many things. How can you control? Where you just knowing by making all the bladder diary, you are able to know that how much you are urinating. Then by this method you can directly pinpoint that your bladder capacity is not low. Once you know that I am taking almost 1 liter of fluid and that is why I'm having so much of urination. So just cut down the fluid. You will, once you cut down the fluid, you will feel that my urine problem that is having a frequency of urination will be subsided. Okay, these things. And the fifth one is the most important thing, that is the Kegel exercise. How you do the Kegel exercise, how you control your muscles as around the urethra, around the penile region, around the rectal region. Okay, this is the most important thing which you should know. And most of the people even are not aware that how to do the Kegel exercise properly.
They are just doing the inappropriate way. What kind of a muscle has to be trained, they are not knowing. Just listen my Kegel exercise, how to do. I will demonstrate that how to do the Kegel exercise. Just stick to the basics. The first important thing in the Kegel exercise, कि what is your problem? In which kind of a problem you have to do the Kegel exercise? मतलब आपको कीगल एक्सरसाइज किस कंडीशन में करना है, ओके। इन किस कंडीशन में कीगल एक्सरसाइज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बार बार यूरिन हो रहा है, इफ यू आर फीलिंग टू मच ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, every time you have a urge of urine, the urgency, the frequency, even in the nocturia, you have to do the Kegel exercise. Not in the case of having obstructing urine flow. It means that Kegel exercise should not be done by the people if they are having a poor flow of urine. If they are feeling that कि यूरिन जो है आपका बार बार तो हो रहा है, लेकिन आपको साथ में ये भी प्रॉब्लम है कि आप यूरिन करते टाइम पे आपको जोर लगाना पड़ रहा है. It means if you are straining for urination, if you apply some extra strain from the abdominal muscles to urinate, you don't have to do the Kegel exercise. So Kegel exercise किस में अप्लाइड है? तो ये Kegel exercise उसी में है जिसमें बार बार अर्जेंसी हो रहा है, फ्रीक्वेंसी हो रहा है, एंड टू मच ऑफ यूरिन हो रहा है, इवन इन द नक्चूरिया हो रहा है. Okay, how to do the Kegel exercise? The first thing, just put a one pillow in between your leg. Just sit down, just like this. I am sitting down here, and you feel that suppose this is my two leg. I am sitting, and this is my two leg, one leg, and this two leg, and in between this two leg, you have to keep the pillow like this. This is a pillow, and you have to press from the both the legs to this pillow like this. One, you have to count for at least 2 seconds, okay. Then you have to relax repeatedly. You have to do the relaxation is very important. Somebody is forget to do the relaxation, they are just pressing the all the pillow system. मतलब मैं बताया कि आप दो पैरों के बीच में आपको एक पिलो रखना है, तकिया रखना है दो लेग के बीच में, और दोनों पैरों से ही उस पिलो को दबाना है, प्रेस करना है, ओके. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ड्यूरिंग प्रेसिंग यू हैव टू बी क्लियरली, you have to be very much conscious that you don't have to strain the abdominal muscle, and you don't have to strain your chest. You don't have to do anything apart from your genitourinary system. It means that कि once you are pressing, जैसे ये आपका दो पैर है उसके बीच में पिलो रखते हैं, आप दोनों पैर से पिलो को प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने पे जो आपका जो जो पावर लगना चाहिए वो आपका जेनाइटल ऑर्गन पे लगना है, रेक्टम पे एंड यूरिनेशन पे और वेजाइना पे. वहां आपका यूरिन का प्रॉब्लम, वहां आपको फोर्स फील होना चाहिए, not at the abdominal. कई लोग, so many people are doing the Kegel exercise. What they are doing that they are just doing they just clenching their mouth, and they just pressing their abdominal muscles. इट मीन्स कि आप अपना पेट को दबा रहे होते हैं, आपको लगता है कि हम कीगल एक्सरसाइज कर रहे हैं. इवन आफ्टर डूइंग माय वेबिनार सीरीज, आई एम डूइंग द कीगल एक्सरसाइज व्हाइल स्पीकिंग. So in the Kegel exercise, you don't have to affect your chest, you don't have to affect your even the abdominal muscles. What you have to concentrate is the rectal rectal area, as well as the urethral area. Even in the vaginal area, you have to focus on that area, not at the level of abdomen and in the chest. For the common people, how to do, you all feel that you are having some stool, you are going for passing stool, or you are going for toilet. Sometimes in your meeting, sometimes in the school, you all are, everyone are doing that you have to control your urination, you have to control your bathroom. How you control that? You just close the sphincter area. So likewise, you have to, like I'm just sitting here, I'm controlling my rectal area as if I'm just closing my sphincter area. From there I we used to pass the stool. तो आपको जो रेक्टम का जो ओपनिंग है उसको बंद करना है 1 सेकेंड के लिए, फिर खोलना है, फिर बंद करना है, फिर खोलना है. दिस इज द वे हाउ यू डू द कीगल एक्सरसाइज बाय द लेमैन, ओके. तो मैंने कीगल एक्सरसाइज कैसे बताया? दो पैरों के बीच में आपको तकिया रखना है, पिलो रखना है, दोनों पैर से पिलो को प्रेस करना है, ओके. पिलो को प्रेस करते वक्त ये ध्यान रखना है कि यू डोंट हैव टू प्रेस योर एब्डोमेन और चेस्ट, okay. You don't have to make any effort from this area.
What from where you have to focus is, while you pressing, you should feel that your urethral lesion as well as in the rectal lesion, you are feeling some kind of a continence, some kind of a closing, some kind of a straining. जब आप ये करेंगे तो आपको फील होना चाहिए, अगर फील नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप सही नहीं कर रहे हैं, यू आर डूइंग रॉन्गली। ओके, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें और ऐड करना है कि ये आपको कितना करना है, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू डू दिस कीगल एक्सरसाइज, 3 times in a day। ओके, for how much repeatedly you how much repeatedly you have to do the perform this kegel is 15, you have to repeat it 15 times। it means that कि आपने दो लेग के बीच में जब पिलो रखा, पहले प्रेस किया, उसे काउंट करिए 1, काउंट किया, फिर रिलैक्स करना है। रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग द रिलैक्सेशन, your muscles will become fatigued, and once it is become fatigued, there is a no use, there is a nothing, you cannot give the power to the your muscles. Because the Kegel exercise is so much important that this will give you the power to control the urination. If you are feeling so much urge to urination and you are feeling that someone having a urgency frequency, all you have to increase the power at the level of urethra as well as the rectum region. Once you give the power to the pelvic muscles, they will start giving the they will just give the different kind of a support that you will not feel the urgency and some kind of a frequency. So how many times you have to do in a day is 3 times. Every time you press the pillow by both the legs while sitting position or lying down position, whatever you feel. Okay, by pressing you have to count it down 1, then relax, then count it down 2, then again relax, and up to 15 times you have to do. One in a one time you have to do the 15 times. In between the relaxation is very important, and not more than 15 times. Why? I just explained that why, because the muscles will become fatigue। आप बार बार किसी से काम कराएंगे तो वो थक जाएगा, अगर वो थक जाएगा तो आपका जो फायदा होने वाला था वही नहीं हो पाएगा। तो कीगल एक्सरसाइज में मैंने बताया कि फोकस कहाँ रहना है, विच पार्ट हैज टू बी फोकस्ड, कैन एनीवन आंसर मी? फोकस कहाँ रखना है कीगल एक्सरसाइज में? ओके, फोकस आपको यहाँ रखना है कि आपका जो भी फोकस है वो यूरेथ्रल रीजन पे होना चाहिए, रेक्टल रीजन पे रहना चाहिए, आपका एब्डोमिनल रीजन और चेस्ट पे नहीं होना चाहिए। ओके, हेलो। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द कीगल एक्सरसाइज, यू शुड नॉट रिपीट it more than 15 times in a day for 3 times। why? It becomes fatigue। okay, right? And the other thing in the Kegel exercise कि for layman you just told them कि आप जैसे स्टूल को रोकते हैं, जैसे यूरिन को जाने के लिए रोकते हैं कहीं मीटिंग पे, ठीक वैसे आप रोके बस। अगर आप पिलो यूज नहीं कर सकते हैं, आप किसी सेमिनार में बैठे हैं, किसी क्लास में बैठे हैं, किसी मीटिंग में बैठे हैं, या कहीं ऑफिस में बैठे हैं यहाँ पे जहाँ पे आपका प्रॉपर यूरिनेशन प्रॉपर आपको कीगल नहीं मिल पा रहा है, तो आप बैठे बैठे कर सकते हैं। just you have to sit it here and open your once you constrict your rectal opening and then relax, open and close and open and close। okay, this is how you do the Kegel exercise even in the while working। just I'm sitting here and taking the webinar, I'm just controlling my rectal part of opening, I'm just one time I'm just closing that, and then I'm relaxing and then closing and relaxing। this is also a kind of a Kegel exercise। in the Kegel exercise, if anyone having a BPH, they can do this, and I already mentioned which patient is needed for the Kegel exercise, those who's having a frequency urgency and urgency, these kind of a patient is candidate for the Kegel exercise, not those kind of a patient who is having a poor flow of urine, those who are having a straining during the maturation. If they are having some kind of straining during maturation, then it is useless for them to do the Kegel exercise। Kegel exercise is one of the best thing that you are not, if you are not taking any medication, if you are not taking any operation,
it was seen in the literature that even the Kegel exercise will provide a 70% improvement in all the frequency urgency kind of a patient. But the sad moment is that nobody is knowing how to do the proper Kegel exercise, what time you have to do, what kind of a muscle you have to train, and how many times you have to do, and in which patient you have to recommend for the Kegel exercise. Now I think you know the types of Kegel exercise and how to do this Kegel exercise. Is there any confusion in the Kegel exercise? Let me know. Okay, great. Yes, so many response I can appreciate here. So I just finished my the problem, the urination tips in the BPH patient. Okay, now I am coming in a different entities, that is overactive bladder. ओके, इन व्हाट इज द ओवर एक्टिव ब्लैडर? आपको ये नहीं पता होगा कि ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या है, देन यू आर नॉट, यू कैन नॉट कंट्रोल एंड यू कैन नॉट गिव देम द एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर द ओवर एक्टिव ब्लैडर. ओवर एक्टिव ब्लैडर में बहुत सारे कंफ्यूजन है. Some people are having an interstitial cystitis, one of a kind of a problem in the urine in the bladder. Some people are having some different kind of cystitis. They are confused with the overactive bladder. So, what is overactive bladder? After saying for overactive bladder, for overactive bladder, one thing must be included. What is the, that is the urgency as well as frequency. What is urgency? It is a compelling desire to void, which you cannot differ. इट मीन्स डेट कि आपको इतना तेज यूरिन का प्रॉब्लम लग रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि उसे रोक सके. That is the definition of urgency. In overactive bladder, this should be there. तो overactive bladder में आपका सबसे पहले अर्जेंसी होना ही चाहिए. अगर अर्जेंसी नहीं है तो इसका मतलब आपको overactive bladder नहीं है. ओके, देयर शुड नॉट बी एनी पेन एंड फीवर. अगर आपको पेन है, फीवर है, तो ये सिस्टाइटिस में चला जाएगा, इन्फेक्शन में हो जाएगा. इसमें कोई पेन नहीं होगा, कोई फीवर नहीं होगा, सिर्फ आपको बार बार यूरिन होगा. फ्रीक्वेंसी होगा, डे टाइम फ्रीक्वेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द नाइट टाइम फ्रीक्वेंसी, दैट इज नक्चूरिया. In the daytime, it means that what is the normal daytime? Everyone are feeling 6 to 7 times urination is normal in the day, and one time for urination in the night is the normal. तो सबसे पहले नॉर्मल समझ लेते हैं, तभी ओवर एक्टिव ब्लैडर समझ में आएगा. तो नॉर्मल हम दिन में जो पेशाब करते हैं वो 6 to 7 टाइम्स होता है, एंड नाइट में जो यूरिन करते हैं वो वन टाइम तक नॉर्मल मानते हैं. तो ओवर एक्टिव ब्लैडर कहने के लिए ये जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी इंक्लूडेड that urgency as well as frequency without having pain and fever, without having any kind of a pathology in the genitourinary system. If you are having some kind of a infection, if you are having a stone, if you are having tuberculosis, if you are having a BPH, then it should not call as an overactive bladder. So, how to diagnose the overactive bladder? If someone is saying that ki, I am having a complete urination urgency and frequency, just look out the urine culture, just evaluate the urine routine microscopy and check the ultrasonography. If the patient is having all this, if the patient is having some kind of a UTI, some kind of a infection, stone, then the treatment part is different. If someone is having everything is normal, then we have to do one thing important, that is uroflowmetry in that patient. In BPS, we should not bother about the rule out all the cause, because we are knowing that it is a BPS because of the old age, because of the symptoms. But in case of an overactive bladder, it simulates between so many different diagnoses. In the overactive bladder, all the things will be normal. Only the two things will be there, that is urgency and as well as a frequency, and sometimes urinary incontinence. It means that in urinary incontinence, you are feeling that if there is some kind of a blockage in your pant or whatever you call that. Okay,
And the other thing, what is important, in overactive bladder, I just mentioned that what is overactive bladder? You are feeling all these symptoms, but without having any pathology. Okay, then how do you confirm that this one is 100% sure that it is overactive bladder? In overactive bladder, you will not find out in old age patient. No. It can be present in a young patient as well as in the old age patient. Even the old age patient is also having a overactive bladder. I don't have a BPH. Then how you will differentiate? Just do the ultrasonography. If it is a BPH, you will having a prostate size enlargement as well as some serum PSA value will be enhanced. Okay, but in overactive bladder there should not be any pathology. Okay, then how you control that urgency and frequency in overactive bladder? The one mantra is very important. One of the most important thing we all should know, whenever patient is coming with the urgency and frequency, avoid the bathroom. If they are sitting, just ask to them कि आप बाथरूम के सामने तो नहीं बैठते. अगर वो बाथरूम के सामने बैठते हैं तो उन्हें मना करें कि आप बाथरूम के सामने ना बैठें. Okay, ask them to go away from the bathroom, and there's some kind of a distance between your room to the washroom so that you will enjoy some delaying during the process. ओके, पहला चीज है कि ट्रिगरिंग पॉइंट को आपको अवॉइड करना है. यू शुड अवॉइड ऑल द ट्रिगरिंग पॉइंट. व्हाट आर द डिफरेंट ट्रिगरिंग पॉइंट that uh, irritant, but very few people knowing that some kind of a drug is also having properties of uh, irritant bladder. So we should, okay, am I audible? Why this showing that in low network? टाइम का एक बार बता दीजिए. ओके, I will repeat everything after concluded my topic. So, moving on the overactive bladder, the most important thing that someone is forget about to look at the what kind of a medication they are taking. Remember always, those who are having a common cold, those who are having a hypertension and diabetic patient, they are feeling more kind of a urgency because these drugs will go into the bladder and they are causing the irritant. So avoid that drugs for few days and reduce the timing of dose and reduce the dose amount and amount of a dose. Then you will spontaneously your the things will be subsided. So you have to find out the trigger. You have to check the trigger point, which trigger your bladder to irritate and what kind of a irritant are there in your patient. Okay, सो पहले मैंने बताया बाथरूम अवॉइड करना है. दूसरा मैंने बताया कि आपको ट्रिगर पॉइंट को पकड़ना है. व्हाट आर द डिफरेंट ट्रिगर पॉइंट? दे आर कैफीन, दे आर अल्कोहल, दे आर स्पाइसी मटेरियल, दे आर pizzas, there are so many things like even the beetroot, even the some medication. In medication you will see that the hypertensive drugs, even you can see that antipsychotic medication, the cough, those patients are having a chronic cough disease, they are having some these kind of issues. What you have to do, the change the timing of drug. Ask to the patient, how do you feel, when is the most you feel the urination problem? If they are saying 7 p.m., just change the dose at the 11 a.m. The things will be subsided by just one single move. Okay. The second important thing is for overactive bladder. What is double work? Sit down. आपको बैठना है, उठ के पेशाब नहीं करना है, खड़ा होकर नहीं करना है, क्योंकि बैठने से बहुत सारे कनेक्शन जो सैक्रम का होता है, जो आपका जो pelvic region है, that there are so many nerves, there are so many neurons will be stimulated by just sitting down. Okay, some kind of a female, they, if they are going for the urination, even they find that some uncomfortable, the washroom, they just standing and they are doing the urination. So avoid that. In the female especially, they should not
ओके, आपको पेशाब करने से पहले आपको जोर नहीं लगाना। Some people, if they are in so much are busy and so much a hurry that they are just going in the bathroom and just trying to urinate as early as possible, बहुत जल्दी पेशाब करने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से पेशाब करें और निकल जाए। तो डोंट डू दिस, because bladder will take your time. You have to respect your bladder, then only the bladder will respect you. Okay, so just go in the bladder, okay, and sit down, okay, and while sitting down, relax your bladder. How do you relax your bladder? For relaxation of bladder, you have to whistle blow, मतलब आपको हवा बाहर फेंकना है। You have to urinate like this, whistle blowing करना है, तभी आपका यूरिनेशन होगा प्रॉपरली। तो आप उनको बताएंगे कि आप पहले रिलैक्स करेंगे, स्ट्रेन नहीं करना है, while you have to urinate while sitting, and during urination you have to blow your whistle like you are some air is blowing outside, like this। एंड ड्यूरिंग आफ्टर कंप्लीटिंग द यूरिनेशन, आपका अगर एक बार यूरिन हो जाए उसके बाद यू हैव सिट इट डाउन, डोंट गो अवे। आपको जाना नहीं है कहीं पे, आपको बैठना है। और 10 सेकेंड के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग 10 सेकेंड और 15 सेकेंड, आफ्टर वेटिंग 15 सेकेंड और 10 सेकेंड, वट एवर यू आर टेकिंग टाइम, ठीक है, यू हैव टू वेट एंड अगेन यूरिनेट। दिस इज द डबल वाइड। डबल वाइड में आपको दो बार वाइड करना है। एक तो प्रॉपर जब आपको यूरिन पास हो गया तो आपने यूरिन कर लिया, फिर आपको बैठे रहना है ऑलमोस्ट 30 सेकेंड के लिए, उसके बाद दोबारा से यूरिन पास करना है। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैडर। इन ओवर एक्टिव ब्लैडर यू हैव टू डू द डबल वाइड सिस्टम इन यूरिनेशन। ओके, ये समझ में आ गया। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द ओवर एक्टिव ब्लैडर, इन ओवर एक्टिव ब्लैडर व्हाट वी सी दैट द पैथोलॉजी लाइज एट द लेवल ऑफ यूरेथ्रा। Once you train your bladder कि how to do the urination, as I already mentioned in the BPS topic, कि don't rush, just make your time fix. Likewise, you have to also make your time fix in the overactive bladder। आपको टाइम फिक्स करना है एज पर योर comfort level। You have to fix your time like 1 hour, 2 hour, 3 hour, or even a 30 minutes, you have to fix according to your own satisfaction, according to your comfort level, then you go for urination। And in between you have to hold that urination. Initially it will be very difficult for holding, but once the time passes you will able to hold। I know that some people are complaining that I'm not able to hold that whatever you're saying, but if you are adding so many things like Kegel exercise, if you are removing all the triggers, if you are distracting your mind, initially hold for 5 minutes, then 10 minutes, then 30 minutes, subsequently stepwise you can hold that your urine after achieving 1 hour. That is very wonderful things for everyone who are having problem of urination. Then if you feel the same thing, you have also applied in the overactive bladder। Okay, in the overactive bladder I mentioned the double void, I mentioned in the time void, I mentioned avoid the triggering point, I mentioned how to diagnose in the overactive bladder। Okay, in overactive bladder this can happen any kind of a patient at any age, but in the BPH you will not feel the problem in younger patient, because the prostate only enlarge in the old age। Okay, this is the conclusion of overactive bladder। The most important thing in the overactive bladder is to diagnose that it is overactive bladder। Unless until you are not able to diagnose, you are not able to treat। Now, what kind of a medication we are using in the overactive bladder? These are all the medication that control in the bladder up to the bladder system। If your bladder is pumping too much of working very rapidly, their muscles are rapidly working, just we are giving some kind of a treatment that is we can say that anticholinergic medication after after taking the advice from the proper urologist, they just control these muscles and all the things will be subsided। But before going for the medication, because some medication having some kind of a side effect like dry mouth, like headache, headache, there are so many problems of side effect. Why cannot we control just by changing our behavior, just by doing the exercise, just avoiding some kind of a food material? These are the three things you can control your urine problem almost 70 to 90% even। Okay, because the urine problem is so much easy to handle that very few people know how to
handle this all the situations. Okay, अब नेक्स्ट आते हैं अंडर एक्टिव ब्लैडर। अंडर एक्टिव ब्लैडर किसको हो सकता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोज हु आर हैविंग अ डायबिटीज फॉर लॉन्गर टाइम, जिसको शुगर हो रखा है बहुत दिनों से, वो क्या करता है कि आपके ब्लैडर के अंदर के जो मसल्स है उसको, न्यूरॉन्स को खराब कर देता है, जिसको बोलते हैं हम डायबिटिक सिस्टोपैथी। ओके, those who are having a diabetes for almost 20 to 30 years, not just recently diagnosed diabetes. Okay, mark it, not just only the recently diagnosed diabetes, those who are having a diabetic problem for almost 10 to 20 years, what kind of a difficulty they are feeling, that they are having a too much of urination. Okay, in that patient, all you have to control your blood sugar, all you have to control your metabolic system. Like if you are obese, you have to control your diet. You, if you are having diabetes, you have to control your diet, as well as you should properly take your medication. In underactive bladder, the first thing is to check what kind of symptoms additional patient is having. Okay, whether the patient is having obesity, whether the patient is taking some alcohol, whether patient is taking whether patient is having a diabetes, मतलब coronary artery disease. And अंडर एक्टिव ब्लैडर में आपको बता दूं कि अंडर एक्टिव ब्लैडर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आपका न्यूरॉन्स खराब है. So whosoever is having a problem, and those who are having a problem in the spine, okay, क्योंकि जो ब्लैडर, मान ये ब्लैडर है और यहाँ स्पाइन है, स्पाइन से ही सारे नर्व आते ब्लैडर को जाता है. ठीक है, ये सारे जो रीढ़ की हड्डियां हैं वो वहां से सारे नर्व जाएंगे ब्लैडर को और ब्लैडर को सप्लाई करेंगे. अगर ये नर्व खराब हो जाएगा तो ब्लैडर आपका अंडर एक्टिव हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा. सो तो आप पहले चेक करिए, पेशेंट से पूछे या पेशेंट अपना खुद देखे कि इफ दे आर हैविंग एनी इश्यू इन द स्पाइन, दे विल फील दैट दे आर हैविंग अंडर एक्टिव ब्लैडर. If there is someone having a complaint in the brain, like they are having a brain hemorrhage, history of brain hemorrhage, history of brain trauma, history of any kind of infarction in the brain, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको मिला कि ब्रेन में है, तो वहां से जो नर्व निकल के आपको रीढ़ की हड्डियों में, स्पाइन में जाते हुए सप्लाई ब्लैडर के अंदर, वो डीजनरेट होगी और आप मिलेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, then all the urination will not go out. Okay, so in underactive bladder, what is the most important thing? There is some pathology associated with your brain, associated with the spine, associated with the neurons, like the diabetes, Parkinson disease. So there are so many problems. पहले जो आपको जो पैथोलॉजी मिलेगी में पेशेंट का पूरा जो ब्लैडर एक्टिव नहीं है, अंडर है, मतलब काम नहीं कर रहा है, यूरिन जो है इकट्ठा हो जा रहा है, वो एक बूंद बूंद करके बाहर निकलेगा. कभी भी कोई घड़ा भर जाता है, कहीं छेद हो जाएगा, भर जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद टपकेगा, कहीं जगह का खाली होगा तो. ठीक है, सिंस bladder is not collapsing, so the urine will not go out at the amount. ठीक है, बट इफ यू आर स्ट्रेनिंग, अगर समवन अगर यहाँ से स्ट्रेन कर रहा है, एब्डोमेन से स्ट्रेन कर रहा है, समवन स्ट्रेनिंग देयर एब्डोमेन, दे विल प्रेस द ब्लैडर somehow and they will remove some kind of a urine. Okay, so only after straining this bladder, then you will pass the urination. Okay, तो द अंडर एक्टिव ब्लैडर में क्या है, आपको पैथोलॉजी हो गया. सिम्टम्स क्या होगा कि स्ट्रेन करेंगे. दूसरा सिम्टम्स क्या होगा, यूरिन तो बाहर निकलेगा लेकिन फिर स्टॉप हो जाएगा. जैसे ही स्ट्रेन करना बंद करेंगे, देन वो देयर विल बी नो यूरिन विल पास. द कंप्लीशन
Hello, am I audible? Hello, Dr. Mansi. Yes, sir. Yeah, am I audible now? Yes, sir. Now you're audible. Okay. So the important thing is underactive bladder, as I mentioned, कि आपको कुछ पैथोलॉजी होगा, ब्रेन से एसोसिएटेड पैथोलॉजी होगा, स्पाइन में होगा, और पेशेंट कहेगा कि आपको कहीं ना कहीं ब्रेन की सर्जरी हुई है या स्पाइन की सर्जरी हुई है। अगर ऐसे पेशेंट जिनको स्पाइन की सर्जरी है, अगर ऐसे पेशेंट जिनको बचपन में कोई भी आपको ट्रॉमा है, these kind of patient often having issues like underactive bladder, then how you explain that what kind of a things they should involve with the underactive bladder, what kind of a tips you are giving for urination in underactive bladder. In underactive bladder, patient is already straining, they are having a good muscles function at the level of genital region, that is rectum and urethra. Then the first thing, you should never told them to do the Kegel exercise in underactive bladder. Okay, I am seeing that so many patients are doing the underactive bladder, they make their worse in the during the urination, they are making their worst system in the urination again just doing the Kegel exercise. तो आपको कीगल एक्सरसाइज कभी नहीं बताना है ऐसे पेशेंट को जिनको अंडर एक्टिव ब्लैडर है। ओके, दूसरा चीज ये है कि आपको पहले से ही पता है कि जो ब्लैडर में यूरिन भरा हुआ है, आप उसको खाली करना है। तो इसमें भी टाइम वॉइड और डबल वॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको जो आपको यूरिन पास करने के लिए मसल्स के अंदर को टोन लेके आना है, मसल्स के पावर को बढ़ाना है। तो मसल्स पावर बढ़ाने के लिए हम बाहर से टैपिंग एक्सरसाइज करते हैं। मतलब आपको डेली बताना है कि आपको लोअर एब्डोमेन पे टैप करें 15 सेकेंड के लिए। जैसे आप मान लीजिए एब्डोमेन है आपका, यहाँ पे टैप करना है 1 2 3 4 5 बिफोर गोइंग फॉर यूरिनेशन। This tapping will stimulate their bladder muscles and will help for reducing the undue tension on the bladder and also helps to pass the urine. The different thing in the urination tips in the underactive bladder is the tapping. Second different thing in the underactive bladder is never advise the Kegel exercise. Third important thing in the underactive bladder, if you are looking them, this the urine will go retrogradely into the bladder, into the kidney as well as ureter. If you find out that in both the kidney is enlarged and both the system is having some kind of a hydroureteral nephrosis, it means that the bladder which having a so much of urine, they are not going outside, they just go retrogradely, मतलब बाहर ऊपर की तरफ आपका आने लगे यूरिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है किडनी खराब होने का डर है। इमीडिएटली आई जस्ट मेक अ वन वीडियो दैट कि इफ पेशेंट इज हैविंग complain of straining during voiding and having some leakage of urine, the first thing in that patient you have to do this catheterization. Forget all the things about the urination tips, just do the catheterization in that patient, because once you are not doing that, the kidney will damage. Okay, in the so in underactive bladder, you have to check the creatinine level, you have to check the ultrasound, then only you have to decide what kind of a therapy you want to give. If you are not find out any kind of a changes at the level of kidney, if cannot find out any derangement in the creatinine value, then only you can advise for urination tips and the behavior modification. In behavior modification, as I already mentioned, the core is to do the double wide, because the bladder of having so much of urine, if you are doing the urination, only the 50% will be passed. After 30 seconds, you will again feel the urination, then again do the urine. It means you have to advise double wide in a patient of underactive bladder vigorously. आप उनको डबल वाइड पे बहुत फोकस कराना है कि डबल वाइड आपको करना ही करना है। अगर डबल वाइड नहीं करेंगे तो यूरिन जो है दोबारा से उसमें ब्लैडर में आके भर जाएगा और यूरिन नहीं कर पाएंगे। ओके, and again the time word, and the different thing is that tapping you have to advise to this patient because of the stimulation and because
And some patient may ask the question that the bladder don't have any sensation, or how does this bladder will give the sensation just after putting the percussion? Because the abdomen muscles having some sensation, although the brain system don't working properly, and the spine muscles don't work properly, but the dermatome at the level of abdomen, they are indirectly associated with the parietal peritoneum. They are just attached with the bladder systems. There are some neurons system lying there. So with this help, you can do the percussion and will advise the patient to pass the urine. Okay. But if you are finding out that if someone is having a hydronephrosis in the kidney, it means that the bladder kidney is having so much of urine. अगर किडनी सूज गया, आपका swelling है, आपका hydronephrosis है, in that patient immediately you have to catheterize the patient, because in bladder there are so much of urine that patient is not able to pass even a single amount of urine, and so all the urine go retrogradely, back pressure is there in the kidney. So you have to relax the kidney, you have to relax the ureter. For relaxing the kidney and you relaxing the ureter, you have to push and you have to place the catheter so that all the urine will be drained. And only after 28 days, आपको 28 दिन के बाद you have to check again what is the status of the kidney, what is the status of creatinine. If you find out that कि after placing the Foley's, कई लोग पूछ सकते थे कि आपको फोलिस कितने दिन तक रखना है, तो आपको 1 मंथ तक रखना है फोलिस. If you see that कि after placing the catheter and you have to evaluate again the both the kidney, if you find that the kidney is now relaxed, there is no hydronephrosis, then only you proceed for some behavior modification. And minded you don't have to advise the Kegel exercise. Then what kind of exercise you have to advise in this patient? That is pelvic floor relaxation exercise. इसका मतलब कि अब पहले कीगल क्या करता था कि कॉन्ट्रैक्ट कराता था, तो उसके अपोजिट होता है पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, जिसमें रिलैक्स कराना है. रिलैक्स किस में कराना है? जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव फ्लो, जैसे स्ट्रेनिंग हो रहा है, पुअर फ्लो, उसमें रिलैक्स करने की जरूरत है. तो हाउ यू एडवाइस द रिलैक्सेशन एडवाइस? द फर्स्ट थिंग इज विसल ब्लोइंग, आप हवा बाहर फेंकेंगे. सेकेंड, जस्ट अपोजिट टू द कीगल एक्सरसाइज, as we pressing the both the legs, in this you just do the apart your both the legs, आपको दोनों पैर को बाहर रखना है. ओके. एंड like you have done the yoga system or breathing, breathe in and breathe out. During outing system you have to focus on the rectal muscles and genitalia muscles. आपको जो भी genitals and rectals issues है, जैसे हम कीगल में दोनों लेग को अप्रोक्सीमेट करते थे, इसमें आपको अवे करना है. अवे करते वक्त आपको हवा अंदर एक बार बाहर लेना है, एक बार छोड़ना है. ओके. आप खुद अभी फील कर सकते हैं, आप बैठे हैं, आप बस हवा बाहर फूकेंगे, whistle blowing करेंगे, blow your air, you feel that some relaxation having, you feel that there is some relaxation kind of a things happening with the around the genitalia and rectum. You just do right now, you feel that. Okay, this is all the things you have to be careful for the proper urination in the BPH, as well as in the overactive bladder, underactive bladder. How to do the, how to avoid how to avoid all the irritant material for the bladder. How to do the Kegel exercise. How you diagnose the case of underactive bladder. How you diagnose the overactive bladder, and what kind of things you look for the BPH patient. This is all the summary. And if anyone having any doubt, just let me know in the question answer session. I will be personally will tell them each and everyone what you have to do this when you have a urination problem. So Dr. Mansi, so we have done all these things in the proper urination tips. If anyone having any issues, if they feel that कि ये बात समझ में नहीं आया, तो let me know. Hello. Yes. हाँ. Someone has asked me, Jayashri,
Jayashri has asked me, what are the criteria to refer the patient for prostatectomy? Is it the size, amount of PVR? So listen, Jayashri, I am going to tell you. Yes, I'm audible now. The Jayashri, it's not the size which we have to deal with the prostatectomy. There's some indication for operation that we call it as a TURP. Before doing the prostatectomy, we have to see the what is the indication. The first indication is that if you are having any kind of a repeated UTI, it means that you if you are having almost 3 to 4 times of urine tract infection first, and the second thing, if you are having some kind of a changes at the kidney level, it means if patient of BPH having hydronephrosis, if it is so much disturbing that it causes some difference at the level of kidney, then you have to operate that prostate. Okay. Second important thing is that if the patient is irritating by the symptoms, if you are someone is taking so much of medications, too many. Hello. Even after taking so many medication, which we call as a refractory to the medication, after taking so many medication for almost 2 to 3 years, patient is not getting improved. In that kind of a patient, you have to operate the prostatectomy. You have to operate the prostate. It doesn't mean ki whatever the size, if it is complaining and the patient is not getting relieved, you have to operate. Okay. And the and another indication for prostatectomy, which is very important, that if you are having a stone disease, the prostate is so much enlarged and so much obstructing the bladder having some kind of a stone. You can see that even in the some prostatectomy, there is enlargement in the prostate. After enlarging the prostate, the stasis of urine happening there in the bladder, and this stasis will leads to the formation of stone. If you are having a recurrent type of stone in the bladder, then you have to operate that prostate. This is the wonderful indication that one is the affecting the kidney, another is having a repeated UTI, another will having a bladder stone, another I just told that is refracted to the medication. And the most important thing is that if some patient is willing for their operation by its own, you can operate that. So it's not the size, it's not another kind of, if patient is improved with the medication, you don't have to operate that patient. Okay. In which lobe of prostate enlargement is dangerous? Yes, it is in the median lobe that is very dangerous, because the median lobe will leads to the obstructing pathway. It's not that the lateral lobe, it's not that the peripheral lobe that is important. Good. How do you know that the prostate is having a malignancy? The one important finding we include during the examination, we do the digital rectal examination. It means that you have to place your one finger, and suppose this is a rectum, you just keep your finger in the rectum and feel that the prostate. If it is a stony hard, like prostate is like a bone, okay, in that kind of a feeling, you see that there is some feeling happening, and there is some changes at the level of parenchyma, and there is some nodularities, and the hardness along with the PSA value is also increased. This will just give the clue that this prostate is going to be malignant, even it is not confirmed. And how you confirm? Before going to do the confirmation always happen with the biopsy. How do you biopsy? How to do the biopsy? You do the biopsy by the help of trust guided biopsy. But as a urologist, I suggest you that, hello, just complete my one sentence. As a urologist, before doing the biopsy, you should do the MP-MRI. Unless you are not doing the MP-MRI, you should not do the biopsy, because once you do the biopsy, there will be some different changes will be appear in the MP-MRI.
So prior to the biopsy, you should do the MRI. This MRI will indirectly will tell that this is a cancer. Then after having a MRI, you just do the trust biopsy. This biopsy will confirm your cancer. No other test will confirm the cancer. Other all the things will just give a clue that it is a cancer. But to confirm that cancer, you have to do the biopsy. Okay. Then how to differentiate the underactive bladder from obstructive pathology like urethral stricture clinically? A very wonderful question. I appreciate that question. Just remember everyone, in underactive bladder, I said that patient will give the history of flow. That history of the flow will, like the patient will give the, there is a on and off mechanism of the urine flow. Patient is having a straining during urination. In the same way, obstructive urethral stricture also having a straining during urination. Both are common. What is the difference? In the stricture, patient will give the constant urine flow. The urination flow is constantly maintained. They will not there will be switch off. But in case of underactive bladder, once the bladder will fatigue, the abdominal muscle become fatigued, there will be sudden cut down in the flow and it will become zero. Not even just a slow down, but it becomes completely shut down their urine flow. Then again the patient will apply some pressure. Then there will be flow system happening at uh, at the level of urine. Are you getting my point, Jayashri? I said that in the urethral stricture there will be constant urine flow, although the flow will very poor. It seems that flow is like a needle system, but in the underactive bladder there will be constant urine flow. Then again the patient will apply some pressure. Then again the patient will So there is a slight network issue. bladder flow is Hello. also so will feel that. Yes, hello. Yes, sir. So there was a slight network issue few seconds ago. Okay, You are audible now. Jayashri, So am any I other questions? one other I would another like, person has just asked me a question. Sir, in yes, sir. UTI, when urine is scanty, painful, and frequent, what exercise we can suggest to patient along with the medication? Dr. Archana Punjabi. In UTI, when urine is scanty, no, no, no. If the urine is scanty and painful, there is some pathology there. You have to remove that pathology. Like in painful urination, you have to ask the urine happening, the painful urination happening. There are two important things before I'm going to deal with the dysuria. Some patient will feel relaxed after the urination. Some patient will feel the pain after the urination. So those patients who feel relaxed after the urination, they are having interstitial cystitis. Nobody will tell you this. Just remember one a very important fact. If someone is relaxed after the urination, then it is interstitial cystitis. So in that kind of a patient, you should never give any alkalizer. You should never give any antibiotic. Okay, if it is interstitial cystitis, if someone is giving the history that after passing the urine they are having some kind of a pain or dysuria or burning sensation, then it means it is a UTI. Okay, so the question from Dr. Archana Punjabi, sir, in the UTI, when urine is patient along with the medication. So the basic exercise, if patient is having a frequency and there is no straining during the passing urine, so you can advise the Kegel exercise after thoroughly asking the question. The patient should not strain during the wedding. You can advise easily the Kegel exercise. But in that patient, if some pain like things involved in that patient, you should ask the pain is subside more, or burning session is more after urination.
This is a very different kind of a someone is saying that just get relieved after the urination, it means the pathology is different. Okay, you have to do something different, and in that scenario you should add some different medication which is very uh, uh, someone is asked also a wonderful question. We that BPH is androgen dependent. Listen carefully. Someone has asking me why BPH happening only in the old age. Why not in the young age? Okay. We all should know that कि BPH जो होता है, it is an androgen mediated organ. If you are having an androgen, okay, then prostate will be enlarged. If you don't have an androgen, prostate will be reduced. Okay, this is the concept which we apply in the treatment of BPH. We also apply in the treatment of malignancy of prostate. The only one thing you have to Hello, sir. Am I audible to you? Hello. So there is a slight network issue from Dr. Parvez sir side. Hello. हाँ hello. I don't know Yes, what sir. happened so suddenly. Yes, sir. Jayashree, The answer you have given that was not audible. So, sir, can you repeat the last part of the discussion you were saying? what was the question that the why the prostate was enlarged in the Yes, sir. old Why age? it happened? Yes, sir. तो मैंने एक काउंटर क्वेश्चन पूछा था कि Yes, sir. prostate is an androgen dependent organ. Okay, everyone is knowing that Mm. fact that the prostate is an androgen dependent organ. If you are having a increased amount of prostate androgen, that is testosterone, there will be high amount of the prostate will be enlarged. This fact we are using in the treatment of malignancy as well as in the treatment of prostate. What we are doing that we just reduce the androgen, the prostate will also become subsided. Okay, the malignancy also becomes subsided. So that is why we all are giving some kind of a medication during the treatment that we just reduce the. Our aim is to reduce the androgen, all the system which lead to the increase in the formation of androgen. We are giving the medication. हम लोग ऐसा medication दे रहे हैं जिसकी वजह से एंड्रोजन कम हो जाएगा तो प्रोस्टेट अपने आप ही सही हो जाएगा क्योंकि प्रोस्टेट जो होता है एंड्रोजन मेडिएटेड होता है. Okay, the thing is that in the old age why not the prostate will reduce because the testosterone is also reduced. We should also know that the fact. I'm going to tell you that there is a different testosterone mediated system in the prostate. We all know that the testosterone name is dihydrotestosterone. This dihydrotestosterone is 20 times better than the testosterone. This dihydrotestosterone is exclusively present in the prostate, and this dihydrotestosterone is mainly seen in old age patients. That is why
even though the absence of testosterone, reducing amount of testosterone because of the presence of dihydrotestosterone, that we say that DHT, there will be enlargement in the prostate, the sensation will be high, the potential capabilities of dihydrotestosterone is so much better than the testosterone. This will be higher in the prostate, and this dihydrotestosterone is exclusively found in the level of all the prostatic cells. That is why the prostate will be enlarged in the older age and not seen in the younger age. In younger age, the testosterone value will be higher, and the testosterone is not that much capable to increase the size of, although that is why the prostate will be enlarged throughout of the life. But the enlargement will be more at the level of older age because the DST value will be increased suddenly. DST will be more potential. DST will causes more response than the testosterone, and this DST exclusively find in the prostate. That is why we see that the prostate is mainly enlarged in the old age patient. Clear? Any other question? Actually, the meeting was suddenly shut down, so the we cannot see the any question answer in my list. Okay. Okay, But sir. No problem, sir. uh, So, anybody has any other question? so how was the topic? किसी को समझ में आया कुछ भी? Raise your hand. Each and everyone are mature, I know. Yes, everyone, please write your reviews, your suggestions. Mhm. How was the session? Muhammad Tariq Zubair. Summary. Thank you, So, Jayashri. Thank you very much. So it was a wonderful session. session was yes, sir. Session was really very informative, and really it was very informational. Like Dr. Prajakta Kale is also saying very informative session. Thank you, sir. Thank you very much. And the topic was really important to hear from you. Mhm. It's the topic from the expert in this field. It was really very nice. Plus, we today we have learned the do's and so many don'ts that we should avoid in the cases of BPH and underactive bladder and hyperactive bladder. Plus, we have gained the insights from the urination tips. Plus, we have gained the information about the exercises. So, I hope all the attendees have gained so much knowledge from Dr. Pravesh sir. Mhm. So, this session will be uploaded on YouTube as well. Dr. Ashish Kumar is also saying it is very informative. Thank you, sir. Thank So, you. sir, I think it's time to Anyone wrap up. else? Someone has just demonstrated the Kegel exercise. Muhammad Tariq Zubair. Hmm. As Yes, sir, Anantha Krishna, sure. it will be good if post in the YouTube. Why not? Sure. Yes, we can also put it on the Homepage 360 website in the academic session. We can put a separate article on the Okay. Kegel exercises. If the sir is Once interested, he can again, also. Dr. Murali Yes, Tyag. sir. One person, Murali Krishna. How can we manage the Yes, sir. DST? Yes, Mr. Murali Krishna has told me, asked me, how can we manage the DST, dihydrotestosterone? It is very simple, as we all know that Mm-hmm. the testosterone will form in the dihydrotestosterone by the help of one enzyme, that is 5 alpha reductase inhibitor. Okay, we give the medicine.
So your connection is, I think, is not there. Yes. Yes, sir. So I think all the questions we have covered, right, sir? Mm-hmm. Okay. So everyone, you can put your reviews and suggestions on the YouTube channel that we are going to upload this session. And Thank you. thank you, sir. So can you please share your experience with Homepage 360? We had a really very great time with you. You have given your so much valuable and precious time to us. Thank you so much, sir. Okay, thank you. I'm going. All right, sir. Thank you, sir.